तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, वो भी मोटोरोला के हाल ही में लॉन्च किए गए स्मार्टफोन के अंदर, जो है मोटो G45 5G। तो मोटोरोला ने काफी कम प्राइस पॉइंट पे इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G चिपसेट है और अपने प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये है 4GB एंड 128GB वाला। इसके अंदर एक और वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 8GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। फोन की स्टार्टिंग प्राइस आपको 11,000 रुपए देखने को मिल जाती है, लेकिन बैंक ऑफर के साथ आपको 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और 10,000 के अंदर काफी बढ़िया आपको इसके अंदर डिजाइन देखने को मिल जाती है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। और अगर आप सभी लोग इसका डिटेल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पे हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो उस वाले वीडियो को। तो गेमिंग टेस्ट से पहले आपको बता दूं कि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही 20 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है और चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। वैसे ये फोन 10,000 के अंदर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी गेमिंग को और भी ज्यादा स्मूथ जरूर से बनाने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को यार फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी क्लोज हैं। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फटाफट से हम चलते हैं हमारे गेमिंग टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले आप सभी को मैं ग्राफिक सेटिंग चेकआउट करवा देता हूँ। वैसे तो ये वाला स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है, तो इसके अंदर वैसे तो आप लो टू मीडियम लेवल की ग्राफिक सेटिंग पे गेम प्लेइंग कर सकते हो, लेकिन हम इसके अंदर फुल मैक्स के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। तो कैसी परफॉर्मेंस हमको ये स्मार्टफोन निकाल के देने वाला है एकदम मैक्स सेटिंग के ऊपर, वो इस वीडियो के अंदर हम जरूर से चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही इसके अंदर मैं एक CS मैच प्ले करूंगा और साथ ही फुल मैप भी हम इसके अंदर गेम प्लेइंग करने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेते हो तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाने वाला है कि आपको ये वाला स्मार्टफोन गेमिंग के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं, खासकर उन यूजर्स के लिए जिनका बजट काफी कम है और आप कम बजट के अंदर भी एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसके अंदर आप लो टू मीडियम लेवल की आराम से गेमिंग कर सको। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे CS के अंदर। यहाँ पे मैंने एकदम न्यू अकाउंट को लॉगिन किया है, उसके पीछे भी रीजन है गाइस, तो यहाँ इस चीज को इग्नोर करना। यहाँ सबसे पहले हम इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं। तो हमने फटाफट से स्टार्ट कर ली है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी। तो जो ग्राफिक सेटिंग है वो हमने अल्ट्रा सेट कर रखा है, प्लस इसके अंदर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो अभी फटाफट से हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन हो चुकी है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मैच को भी। इंडिया इज सेट। First two. Help me! Thanks. Enemy spotted. Help me! Thanks. Help me! Double takedown. Enemy spotted. Double takedown. First doom. Double takedown.
spotted! Double takedown. Need First equipment! doom. Ugh! Double takedown. Ace. First doom. Help me! Triple takedown. तो फ्रेंड्स हमारी मैच है यहाँ पे बुया हो चुकी है और जो परफॉर्मेंस निकाल के दिया है इस वाले स्मार्टफोन ने वो काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। तो आप में से काफी सारे लोग सीएस प्लेयर होंगे जिनको सीएस रैंक मैच खेलना ज्यादा पसंद है, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि यहाँ पे आप अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग पे रख के खेलिए या फिर आप स्टैंडर्ड ग्राफिक पे रख के खेलिए, आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो बिल्कुल न्यू है तो आपको मैक्स सेटिंग में भी अच्छी गेम प्लेइंग करवा देगा। और यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी ऑलमोस्ट 12 मिनट के ऊपर जा चुकी है। तो जैसे कि मैं आप सभी को ग्राफिक सेटिंग के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है। तो अगर आप सभी लोग लो सेटिंग पे गेमिंग करोगे तो आपको और भी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। वैसे हीटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हुआ है, पीछे के साइड ज्यादा हीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हीट हुआ है ये वाला स्मार्टफोन। एंड फ्रंट साइड पे भी थोड़ी बहुत हीटिंग मेरे को महसूस हो रही है और ये वाली हीटिंग बिल्कुल ही नॉर्मल वाली हीटिंग है। और फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करेंगे हम बीआर मैच को। और यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं ग्राफिक सेटिंग चेकआउट करवाना चाहूंगा। तो डिस्प्ले में जाके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैक्स ग्राफिक है, हाईएस्ट ग्राफिक के ऊपर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी बीआर मैच को। और साथ ही इसके अंदर भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करने वाले हैं। ज्यादातर आपको मैं फाइट सीन ही दिखाऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं फुल मैप के अंदर ये वाला स्मार्टफोन हमको कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। Free Fire India is set. Double takedown. Triple takedown.
Quadra takedown. Enta takedown. Unstoppable. Rampage. Takedown spree. 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 Takedown. Quadra takedown. Enta takedown. Rampage. Takedown spree! 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 तो फ्रेंड्स हमने इस वाले डिवाइस में पूरे 2 मैच बीआर के प्ले किए और अभी तक जो परफॉर्मेंस निकाल के दी है इस वाले स्मार्टफोन ने वो काफी बढ़िया हमको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी लोग एक ऐसा बजट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आप लो टू मीडियम लेवल की ग्राफिक पे काफी अच्छी गेमिंग कर सको तो इस वाले स्मार्टफोन की तरफ आप सभी लोग देख सकते हो और आप सभी लोग अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका 8GB वाला वेरिएंट ले, उसके अंदर आपको और भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुली लगी हो तो एक लाइक यार जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।